सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। From the Republic Media Network headquarters, it's time for Arnab Goswami on the debate. Arnab Goswami on the debate. On the show tonight, bumper voting in Bihar. Which way is Bihar swinging? At 9 o'clock tonight is the countdown to November 14th with Arnab Niaz, who is exploiting the divide playbook, who is trying to make this a Hindu versus Muslim narrative in Bihar. And ladies and gentlemen, Bihar has sealed the fate of 121 constituencies today. Phase 1 of polling is done and it's really super bumper voting. This is extraordinary increase in the voter turnout, ladies and gentlemen. In the phase 1, I see almost a 10% increase in voter turnout. That's the story. 55.7, 64.46, or approximately 55 to 65 kind of percentage, about a 10% increase in the voting. Now these are very, very major, this is a very major increase in the voting percentage. The numbers there are not correct on that graphic, we'll have to fix that. But the rise in voter turnout always does not indicate anti-incumbency. The question is it necessary that if a lot of people turn out and there's much more voting than last time, then it's an angry voter, upset voter who wants to vote someone out. In this case, what I'm reading and hearing and what is apparent is that while there may be some disillusionment, as there always happens with someone who's been in power for a long time, there isn't that kind of anger against Nitish Kumar. Ladies and gentlemen, it is therefore wrong to presume that the rise in voter turnout means anti-incumbency. Ladies and gentlemen, this time 9 out of the 121 constituencies had a wafer thing in majority. The point I'm trying to say is that there is a turnout surge. The turnout surge can be either way. But if you look at past trends, whenever there has been high voter turnout in recent years, it has not been the case that the BJP is voted out. Let me share a few examples. In Haryana, from 2019 to 2024, the voter turnout remained around 68%. That's very high. The BJP came back. In Maharashtra, the voter turnout went up from 2019, 61.4 to almost 65.11 in Maharashtra. Very high voting. The BJP, NDA came back. The Mahayuti government was repeated. In Delhi also, when the voter turnout remained over 60%, the BJP formed the government. When the voter turnout had gone down, the BJP formed the government after 26 years. In Gujarat, when the voter turnout remained more or less high, around 65%, the BJP came back. In Madhya Pradesh, when the voter turnout in 2023 went up to 76%, the BJP came back. And in Rajasthan, ladies and gentlemen, when the voter turnout was 74%, that's very, very high, the BJP formed the government. So, is there a possibility that there is pro-incumbency? We can't say whether there is or isn't, but there is entirely a possibility that the impact of the direct transfers that the Nitish government did on the eve of the elections, 10,000 rupees for women, from certain sections may have worked for it. The analysis this evening is going to be only and principally on the super voter turnout that has been there in phase 1 of the election and who it may impact positively and negatively. Let's debate.
The phase 1 of Bihar election show historic numbers of voter turnout. As of 7:30 p.m., the voter turnout in Bihar was 64.46% compared to the 55.7% in the phase 1 of 2020, an increase of about 14%. While the fate of big names like India's Chief Minister candidate Tejasvi Yadav and NDA's Deputy Chief Minister Samrat Chaudhary were sealed today in phase 1 in Raghopur and Tarapur respectively, the political dangle in Bihar is only intensifying. ये गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा. Not just that, the RJD adopted a social media game as the polling began. The RJD alleged that electricity was cut off on strong booths of the Mahagathbandhan to slow down the voting. But the ECI was quick to dismiss these claims, calling them baseless and misleading and assuring that voting was taking place smoothly at the polling stations. Meanwhile, the campaigning for the phase 2 of the elections move ahead with double the force. आप कल्पना कीजिए, अगर बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार और देश का सबसे भ्रष्ट परिवार जो जमानत पर बाहर है, ये दोनों अगर सत्ता में होते तो ये पैसे बहनों के खाते में नहीं, एक कांग्रेस आरजेडी के नेताओं की तिजोरी में पहुंच जाते. On one hand, while Bihar was voting in historic number, on the other, leader of opposition Rahul Gandhi on the campaign trail was questioning the Bihar mandate even before the voting for phase 1 ended. जहां भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये वोट चोरी करके इलेक्शन जीत रहे हैं. और कल पूरी दुनिया को हमने दिखाया कि बीजेपी ने, इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है. और मुझे लगता है कि पिछला चुनाव बिहार में भी इन्होंने चोरी किया. तो इस बार वोट चोरी नहीं होने देनी है. The big question is, with Bihar coming out in historic numbers in contrast of the 2020 elections, is this a mandate for retaining the double engine or for change? Okay, ladies and gentlemen, we are analyzing the super trends today with Nikhil Anand, the spokesperson of the BJP, Sanjay Kumar, spokesperson of the JDU. We have Ratan Sharda with us. With me in the studio is Manoj Singh ji. He's the director of the cephalological organization called MatRise. Thank you very much, Manoj ji. And we have with us Anukriti, spokesperson of Jan Suraj Party, and Dr. Jayan Jigyasu of the RJD, and Ratnakar Tripathi of the Congress Party. मनोज जी, दिस इज बम्पर वोटिंग. इस पर आपको कुछ कहना है. द स्टार्ट आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? डिड यू एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ अ वोट टुडे? उम्मीद तो पहले से भी थी कि बिहार में बम्पर वोटिंग होगी. क्यों? दो कारण थे. एक तो एसआईआर में जो नाम कटे, जो 65 लाख लोगों का नाम था जो कटा, तो उसके कारण भी वोट परसेंटेज हर बार की अपेक्षा इस बार बढ़ते हुए दिखना. दूसरी था कि युवाओं आपका एक मिनट आपकी माइक नहीं चल रही. प्रोडक्शन टीम ने अभी बताया, आप जाके माइक लगवाइए. इन द मीन टाइम I would like to get a sense from the other side. The voting हो रही है, Jayan Jigyasu. This is being said that this is a pro-incumbency vote. Pro-incumbency vote, इसको BJP is calling it a pro-incumbency vote. और पहले भी जहाँ voting trend ज़्यादा हुई हैं, बहुत बार दिखा है कि BJP has come back. Like in all the states I mentioned, Haryana, Maharashtra, Delhi, Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan. हर बार opposition thought कि ये vote anti है, बट रिजल्ट में प्रो निकली. आपको क्या कहना है, जयंत? They can interpret this turnout the way they may like it, but people have voted for change. They have voted for the social, political, economic, educational upliftment for the most vulnerable section. And they want to see Tejasvi Yadav ji as the next Chief Minister of Bihar. So this turnout is clear-cut sign
for a change, and change for a better Bihar, change for affordable education, better health facility, and whatever we have promised, we will deliver. And within 20 days, you're looking less confident today. Any particular reason for that? You're looking a little worried and concerned today, Jayant, if I may say so, compared to your previous TV appearance. I don't know why. I don't know. You tell me. No. I'm very calm and composed person. Okay. So we are quite confident that we are going to form the government, and we need simple majority of 122 MLAs. So we have never claimed about 225. Then we have changed the position like Amit Shah that no, we are going to have 165 MLAs. No, we just want to see Tejaswi Yadav ji as the Chief Minister, and for that we need simply 122 MLAs. And why are you bringing down your expectations? I wouldn't say so. I want a view from Nikhil Anand. As we put the numbers on the air, ladies and gentlemen, out of the 121 constituencies that went to the elections today, 9 had wafer-thin margins. But if I look at even Raghopur, there is an increase of 5.6%. Siwan, there's an increase of 2%. NDA seats like Lakhisarai, increase of 7%. Tarapur, increase of 1.8%, which means mobilization has intensified across the political spectrum. मतलब या तो एक साइड ने बहुत मोबिलाइज किया या दोनों साइड से मोबिलाइजेशन हुई है, क्योंकि आरजेडी वाले सीट्स राघोपुर में भी वोटिंग इंक्रीज हुई है. Nikhil Anand. They're very enthusiastic. Nikhil Anand. Arnab. They're going to give the Chief Minister to the field. Arnab, you see that we have gone to this election on a very staunch credibility factor. And there is no anti-incumbency for Nitish Kumar ji. Whatever we have done in last 20 years and recently, whatever we offered to the woman section of the society. How are you so sure there is no anti-incumbency for Nitish Kumar after 15 years? We are 15 साल के बाद तो everybody will have 15 साल के बाद किसी पर भी anti-incumbency होगी ना? Arnab ji, if the assessment is based on preconceived notions and preconceived methodology, of course, anyone can visualize that there can be anti-incumbency. But when the government is working in a positive manner for the welfare of common masses of Bihar, then of course, there is no anti-incumbency. And a big number of women, they will exceed the number of male voters in this coming election. After the voting is over, you will see the data. Yeah. They are voting for Nitish Kumar ji. I haven't got the data yet. Have you got the data on women voters? Does anyone have the mandate? You are right here. You are right here because Manoj Singh of Metrise, who is here with me in the studios, also had a similar observation. We were on the Hindi program Puchta Hai Bharat. And one more point I wanted to add. I said, don't take him on. I'll put Manoj ji in the middle. You let the person who's speaking speak on the left. And I'll cut to Manoj ji later. I don't want to direct during the program. Stay with those windows. Don't disturb me while anchoring, Aditi. Yeah, please continue, sir. Thank you. Continue. Continue, Manoj. Please. You were saying, Nikhil. Yeah, I'm saying that 10 to 20,000 voters in every assembly constituency is less now after the SIR process. And that is also one factor that we are visualizing this increased voting number. All over the Bihar, you see that around 60 lakh voters have been omitted. In a particular constituency like mine, there is one Maner assembly constituency, 30,000 voters were deleted. Among them, 14,000 were those who died between 2003 to 2025. Later on, 12 to 13,000 voters were those who were double or triple voters. And 3 to 4,000 voters, other voters who migrated from this place to other place, or in the constituency. So this has also added to the assumption and to this factor that voting has increased. But there is no anti-incumbency. This voting has been done in favor of Nitish Kumar and NDA government.
And we are sure that when the result will come out, we will come back with a thumping majority. And Nitish Kumar ji is going to be the chief minister again. इंटरेस्टिंग. व्हाट आर यू रीडिंग? आप क्या देख रहे हैं? आपको मतलब वोट विमेन वोटर्स का टर्नआउट अभी तक निकला नहीं है मनोज जी. आप इस वक्त व्हाट आर यू वेटिंग फॉर टू सी? मैंने आपको बोला कि ये कल दोपहर तक पता चलेगा कि महिलाओं का वोट प्रतिशत पिछले की अपेक्षा कितनी बढ़ी हुई है. टर्न ओवर बढ़ने का, वोट परसेंटेज बढ़ने का दो कारण मैंने बताया. एक तो था कि जो नाम कटे हैं उसके कारण भी टर्न ओवर बढ़ेगा. दूसरी बात है कि एक और कारण बनेंगे. एक, जिस तरीके से यूथ को इस बार शामिल किया गया है बेरोजगारी के नाम पे, और दूसरा 10,000 रुपया जो उनको सहायता दी गई है महिलाओं को रोजगार के नाम पे. ये दो तीन कारण थे जिसके कारण. अगर आप एसआईआर को भी मान के चले, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, उसमें इतनी बढ़त नहीं होती है. हाँ, आप अगर देख रहे हैं, इट इज अ 9% इंक्रीज ऑफ द वोट जी. एसआईआर में कितने लोग इंपैक्ट होंगे? 3%, 4%? नहीं, देखिए किसी क्षेत्र में 20,000 25,000 तक वोट गए, 1.5 लाख तक वोट कटे. हाँ, परसेंटेज करीब 10% तक भी आ गए. 10% तक आ गए. आप कह रहे हैं कि ये जो दिख रहा है एज एन इंक्रीज इन वोट, इट मे नॉट बी बम्पर वोटिंग, इट मे बी स्टेबल वोटिंग. हाँ, पहले की अपेक्षा. लेकिन मगर क्योंकि परसेंटेज, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कम हो गए, हाँ, इसीलिए परसेंटेज ज्यादा दिख रहा है. हाँ, ये जो इतना ज्यादा बढ़ोतरी दिख रहा है उसके कारण दिख रहा है. दूसरी बात है कि दो और कारण थे. जैसे युवाओं के लिए रोजगार की बात की गई थी, और दूसरे महिलाओं को जो सम्मान दिया गया था 10,000 रुपए की तरह, ये दो चीजें थी. चुनाव जो था एक अपने तरीके से वहां पे चलता रह रहा था. एग्रेसिव कैंपेनिंग वहां नहीं हुई बीजेपी के सिवा. आरजेडी के कैंपेनिंग में इस बार वो दम नहीं दिखा जो 3 महीने पहले वो चुनाव की अपनी तैयारी कर लिए थे. इस 3 महीने में 2 महीने जो राहुल गांधी का एसआईआर का जो चला कि हम किस तरीके से वोट चोरी की जा रही है, वहां पे आकर आरजेडी अपने कैंपेनिंग से कहीं ना कहीं बिखरा उसके कैंपेनिंग में दिखा. और ये कारण था कि ये सारी चीजें दिखी कि उनके साथ वोटर जो थे जिनके लिए वो लेकर आए थे वो शामिल नहीं हो पाए. दूसरी बात कि उन्होंने जिस बेरोजगारी की बात की और जितने लोगों को नौकरी देने की बात की, वो ज्यादा चुनाव प्रचार से वो मजाक की तरह लोगों ने उसको उड़ाया कि अरे भाई 2 करोड़ ये नौकरी कहां से देंगे. इन्होंने चुनाव इलेक्शन के बीच में इस तरह की बातें बोल दिया है. तो ये सब चीजें थी कि जहां चुनाव को दिख रहा था कि किस दिशा में जा रहा था. हम लोगों ने सुबह भी किसी जगह पर मैंने बोला भी था कि इस बार जो मुझे उम्मीद है कि 65% या प्लस उससे वोटिंग परसेंटेज आएगी. और मुझे तो लग रहा है कि 1-8% में कहीं से मिस हो गया जो इतनी बड़ी वोटिंग परसेंटेज दिखा. लेकिन एक चीज है कि बिहार में जिस तरीके से बदलाव की बात आप कर रहे थे और उन लोग कर रहे थे, नीतीश कुमार को लेकर बिहार में किसी प्रकार का एंटी इनकम्बेंसी हम लोगों ये बात आप रत्नाकर त्रिपाठी जी को बताइए. नहीं, रत्नाकर त्रिपाठी जी राहुल गांधी के बारे में कम बताएंगे, मेरे बारे में ज्यादा बताएंगे. अभी आने दीजिए. आपके बारे में क्यों? हाँ, मुझे मेरे बारे में ज्यादा पर्सनल अटैक, वो पर्सनल अटैक पे ज्यादा जाते हैं. वो कठिनाई है उनकी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं. लेकिन मेरा एक मानना है कि हम इलेक्शन को किस तरीके से बोलना चाहता हूँ जी मैं बोलना चाहूंगा. क्या मेरी कठिनाई से क्या खेत जोता है आपने मेरा? जी जी नहीं, आप शुरुआत रत्नाकर जी वहीं से करते. पिछले डिबेट में भी शुरुआत वहीं से किया कि अरे मनोज जी बोलने दीजिए. आपने जो 4 जून को स्टूडियो में बोला वही बात मैं कोट करता हूं कि मैं योगी आदित्यनाथ जी के सजातीय ठाकुरों का वोट को काउंट नहीं कर पाया मूड को. मैं स्टैटिस्टिक्स का पोस्ट ग्रेजुएशन का छात्र रहा जी. ये मुझे बताइए फीलिंग्स किस फॉर्मूले से आप काउंट. लेकिन देखिए आप उसके छात्र होते हुए आपने बहुत खराब बात बोली ना. गोस्वामी जो ऑलरेडी मुझसे चिढ़े हुए हैं उनको समझाया कि मैं वो बोलने लगा पर्सनल. No, I'm just saying there should be a movie made. There should be a movie made लापता नेता starring Rahul Gandhi, co-starring all the candidates of PK who have run away and joined the BJP in the last 48 hours. This movie should be called Lapata Neta. Like Lapata Ladies, it will win many national awards. Please continue, Ratnakar ji. I can be absolutely sure that you have nothing in the Bihar. You just want to defeat Tejasvi. You have a single point agenda to defeat Tejasvi. Manoj ji, I don't want to distract. मनोज जी 2 करोड़ अगर नौकरी बोल देते हैं तेजस्वी यादव तो जनता में घबराहट हो जाती है. और 1 करोड़ जब मोदी बोलते हैं तो जनता खुश हो जाती है. जब आपका ये कैलकुलेशन है, आपके कैलकुलेशन में स्टैटिस्टिकल हम आप बैठ के बात कर लेंगे कि which formula do you use anyway to calculate the anyway one thing which has happened in the Ratnakar ji, this is very enjoyable,
But one I'm thing not which has enjoying. no, I'm this just is very telling you. enjoyable. But one अगर thing वो which has 2 happened करोड़ recently, बोले, which तो is लोग नाराज हो जाते हैं। one thing which has और happened 1 करोड़ recently. बोल दे, No, तो no. लोग बताशा बांटते हैं। No problem, no problem. See, the thing is, please understand that some interesting thing are happening. I am taking the example on a serious note of what has happened in Mahua. I don't have the final numbers yet, but Mahua from 61.1% in 2020. Please note, Sanjay Kumar, to for about 55%. Now there's a 6% plunge in Mahua. Jayanji, you are a student of political science, you'll find this interesting. This seat, once held by Tej Pratap Yadav, was won by Mukesh Kumar of RJD by 8% margin. If there is a 6% drop in participation in a Yadav majority area, it can indicate voter fatigue, disillusionment, and weak local mobilization. It may also reflect internal RJD voter apathy, but it is also possible, Sanjay, that whatever 1-2% Congress voters were there did not come out because Rahul Gandhi is not interested. Mahua is a purely rural constituency. It has 15% Muslim voters, and Congress party yesterday has said, Musalman Congress hai, Congress Musalman hai. The very big statement made. कब बोला गया? चलाइए। आपको कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा है कल कि कांग्रेस मुसलमान है, मुसलमान कांग्रेस है। आप बताइए ना। आप चलाइए। कौन रिस्पांसिबल आदमी ने कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ये कह दिया कि ये जरा मुझे ब्रिंग आउट रेवंत रेड्डीज बाइट प्लीज। रेवंत रेड्डी ने कहा, जो मुख्यमंत्री हैं आपके तेलंगाना में, इन्होंने कहा कांग्रेस मुसलमान है और मुसलमान कांग्रेस है, यानी कि इन्होंने वो कह दिया है जो लोगों को शंका थी कि कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है। सुन रहा हूं, चलाइए। I have all the time for you today. I'll just pull it. It just take 2 minutes. I'll bring it out. Okay, just relax. You bring it out in the should I same play word. this? Should I play this? Should I play this? मैंने सोचा था 9 बजे चलाऊंगा, but here it is, Sanjay. Please notice this. Congress leader says Congress is Muslim and Muslim is Congress. Please note. On the and ये comment जो है, relax, don't know 1 second, 2 second, 3 second. This comment has been made right on the eve of the voting in Bihar. इनको पता है कि अगर कांग्रेस के मुख्यमंत्री कह दे कि कांग्रेस इज मुस्लिम एंड मुस्लिम इज कांग्रेस, तो इसका इंपैक्ट होगा। आपके टीवी चैनल पे अभी विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार आएगी, राहुल गांधी छाती पे बुलडोजर चलेगा। एक मिनट, शुड आई प्ले द साउंड बाइट संजय बिफोर आई मूव ऑन? प्ले द साउंड बाइट, वॉल्यूम अप। कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है। जब कांग्रेस नहीं है, अब कुछ नहीं है। कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है। जब कांग्रेस नहीं है, अब कुछ नहीं है। एक मिनट, रिलैक्स। देयर इज दिस बाय 1 minute. There is a 2-part. I'll play the full thing. 1 minute. This is a very small bite. Play the entire bite, which has exactly what I have said. See, आम कांग्रेस नहीं है तो मुसलमान कुछ नहीं है, ऐसे कोई बात करता है? उन्होंने कहा पुल द होल साउंड बाइट यार। यू नो माय प्रोडक्शन टीम मेक्स मिस्टेक्स और मुझे रत्नाकर त्रिपाठी से सुनना पड़ता है। आई प्ले द होल साउंड बाइट। ये मेरे डेस्क की प्रॉब्लम है कि 5 सेकंड की क्लिप काटते हैं और रत्नाकर त्रिपाठी को मौका मिलता है। देखिए आई प्ले द होल साउंड बाइट। अरे हर न्यूज डेस्क की प्रॉब्लम है, आउटपुट डेस्क 5 सेकंड की क्लिप काटता है। पूरा चलाइए, 1 मिनट की क्लिप इनको सुनना पड़ेगा आज। Anyway, हाँ, तो Muslim vote has the Muslim got disillusioned here with the Mahagठबंधन? Sanjay, I think there is fight among what is the desk doing? There is a fight among themselves, Arnab, between like RJD, Congress, and AIMIM. All of them are fighting to get hold of Muslim votes, and the Tuštikaran Rajniti that they want to play. This is very clear. This is very obvious that one of the CMs, and I was telling you, Arnab, that the way
that the way Congress works around election, and especially in Bihar, Rahul Gandhi disappeared after he brought up the issue of vote chori. He disappeared and he traveled around the world, but he never invested time in Bihar. And now on the eve of election, he came with this so-called H-bomb, where, I think the bomb is getting diffused with his claims, the false claims. And now this... Well, one minute. By I'm going to sound bite. I'm going to play it now for a minute. Just hold on. Everybody hold on. Audio here. Please listen and I'll get the video up. I'm quicker than my news desk. Full bite I want to play. Don't give me video. Have you got the full bite? I have got a 24-second bite. प्ले करते हैं ना इधर देखिए ये कांग्रेस मुस्लिम है मुस्लिम कांग्रेस ऐसे कोई बात करता है ओपनली सभा में बोलिए ना प्ले दिस मैं बोलने का मतलब मुसलमान का मतलब कांग्रेस कांग्रेस का मतलब मुसलमान आज कांग्रेस की ताकत तेलंगाना सरकार की ताकत हमारे मुसलमान भाई बहनों एक भाषण दे रहे थे मैं बोलने का मतलब मुसलमान का मतलब कांग्रेस कांग्रेस का मतलब मुसलमान आज कांग्रेस की एनी डाउट रत्नाकर त्रिपाठी मुसलमान का मतलब कांग्रेस कांग्रेस का मतलब मुसलमान तो हिंदुओं का क्या होगा आपको क्या दिक्कत है मुझे कोई दिक्कत नहीं है फिर आप मुस्लिम कांग्रेस पार्टी बन जाइए आप कांग्रेस पार्टी फॉर मुस्लिम्स बन जाइए ये सही है आप मुझे बताइए ये बड़ा हेडलाइन है आज कांग्रेस का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं आपने बोला कांग्रेस का मतलब मुसलमान नहीं सिर्फ मुसलमान कांग्रेस मीन्स मुस्लिम मुस्लिम मीन्स कांग्रेस और फिर सेक्युलर कहते हैं दिस इज फ्रॉड रत्नाकर त्रिपाठी फ्रॉड इट्स पॉलिटिकल फ्रॉड संजय को बोल रहा हूँ who's directing भाई संजय is speaking on the left आपके चैनल पे संजय go on and they are that is why they are failing in every state during the elections. That is what they are trying to bank upon, and the kind of statement Revanth Reddy has given, this is shameful, this is sheer shameful, nothing else. What this gentleman would say? How do you defend this statement, gentleman? I'm defending. How would you defend? कैसे डिफेंड करेंगे आप इसको? Let me speak. ये जो आपके जो चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं कैसे डिफेंड करेंगे आप? तो हमारे प्रधानमंत्री जब बोलते हैं कि आतंकी क्या बोलते हैं कि बीजेपी का मतलब हिंदू और हिंदू का मतलब बीजेपी? सुनिए ये कहते हैं अरे बात सुनिए ना और जब गिरिराज कहते हैं कि कटुए काटे जाएंगे तो क्या होता है क्या कटुए हैं कौन काटे जाएंगे आप बताइए Come on, don't. केंद्रीय मंत्री है ना गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं और इस देश की एक आबादी को वो कहते हैं कटुए काटे जाएंगे कटुओं को पाकिस्तान एक मिनट नरेंद्र मोदी पुट्स आउट अ ट्वीट ब्रेकिंग न्यूज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी has just tweeted प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है that in the first phase of voting in the Bihar elections the NDA has gained a massive lead. तो और क्या बोल सकते हैं? Along with this, its wave is visible everywhere in the second phase as well. और क्या बोलेंगे? Ratan Sharda, is the Prime Minister putting psychological pressure? Well, Mr. Modi's presence itself is psychological pressure on everybody. They don't know how to react. Rahul Gandhi keeps on missing the ball. He does not know what is his theme. So Bihar election, when the Mahagathbandhan looks at it, they will realize that actually they have misled the voters. They don't understand what exactly they are telling the voters. And for that, Rahul Gandhi is responsible. So whatever PM says, he is just reinforcing the idea that while ND is very clear what it is doing, this Mahagathbandhan is not clear at all. On one side, you are totally pampering the Muslim community directly by name, and you are neglecting the Hindus. The side, there is question of Jungle Raj, and there is question of what Nitish Babu did all these years. See, he is known for his schemes which are delivered. And Tejasvi is known for his father's deeds and misdeeds. And very voting is concerned, what is important is
who voted in higher numbers. If women voted in higher numbers, as the Q tell, then naturally advantage goes to Nitish Kumar and NDA. And if you talk of youth, if youth have turned up for voters, then maybe Jan Suraj party could have some hope, or Tejasvi could have hope. But as we see, overall increase, even if we discount the numbers that are deleted, clearly there is enthusiasm among the voters. Sir, I want to show. And as I see, if women come out in large numbers, advantage definitely is NDA. And the message that has been diluted by Rahul Gandhi time and again, with some vote chori continuously, some other kind of subjects, he has not stuck to one theme. Tejasvi had a theme. There's one question I have here. There is one question I have here, and I would like to bring everyone in. I don't want to keep the Jan Suraj party representative out of the debate, but whatever is happening to your party is extremely unfortunate. Either this will be the lowest return on heavy investment financially by Prashant Kishore, but you know, Jan Suraj candidates have been leaving and joining the BJP. Now, a lot of people would say that if we have to vote for the BJP, we'll vote directly for the BJP. There is no way we will vote for BJP through Jan Suraj. And in Gopalganj, your party candidate has run away. In Buxar, your party candidate has fled. दानापुर में भी आपके पार्टी से पलायन हो गया आपके कैंडिडेट के, वो लापता है, missing. And in Munger also, one day before the voting, your party leader ran away and is now campaigning for the BJP. So was the Jan Suraj actually a political party, or was it a decoy vehicle for BJP? Was it a decoy vehicle for BJP? यानी कि एक तरह से राजनीतिक मुखौटा थे बीजेपी के लिए कि लास्ट मिनट में टर्न कर जाएंगे. और मैंने कल भी कहा था कि फॉर सम रीजन ही इज नॉट एक्टिव इन द लास्ट 7 days. लीडर्स लास्ट फेज में एक्टिव होते हैं, बट प्रशांत किशोर went inactive very slow in the last 7 days. Any comments from you on what exactly your strategy was? Because so many leaders running away from your party is raising some very severe questions about you. Yes, please. Can I? Thank you. Thank you so much. First of all, good evening, everyone. Good evening, the country. Yes. Arnab, the entire interpretation of what you just said is, I am very apologetic to tell you that it's absolutely wrong, because nobody is running away from Jan Suraj. They are being bought. Let's mince no words. They are being bought either by money or by threat. The way people have left 18 hours, 20 hours before polling is to be done cannot be a very simple, straightforward thing. We know for a fact that a lot of money has exchanged hands, or a very serious threat has been placed on either the family members or even the children. No, this is a very serious charge. Especially in the case of Munger. No, this is a very serious charge, viewers. In Danapur, let me complete. In Danapur, the Home Minister as well as the Education Minister of India, Mr. Dharmendra Pradhan, they are both present, sitting in a paltry candidate's house the whole day long. Look how desperate BJP has been. Which paltry candidate are you talking about? To figure out a way. Which paltry, and why are you candidate? Direct threat. You're talking about a decoy? No. Jan Suraj has been a direct threat against the BJP. This is the repeat of Surat. This is the repeat of Bhagalpur Lok Sabha elections, where the Prime Minister had himself called the Bhagalpur candidate to sit down. So yes, this has been. May I ask you a question, ma'am? May I ask you a question? Secondly, may I ask you just a follow-up to that, please? Anukriti, if I may just ask you a small follow-up, please allow me. Please. Anukriti, you are in your right to make allegations. However, I would feel that if the charge were as serious as the one you're leveling, why are you saying it? Why has Prashant Kishore not done a press conference and produced proof of what you are alleging? Mr. Prashant Kishore did a press conference the day the Danapur debacle had happened. No. Yes, He's not. He had done a this press is very conference strange. on Mr. Ritesh Shah's defecting to the BJP on the day of the second day.
he had done a press conference on the 3 people who initially defected. I think Nikhil should This is in respond the to this. middle. Nikhil, we are in the middle Nikhil, of, see, we are in the middle of polling. What you're Yesterday saying, something happened. The Munger case one minute. happened There are only serious charges You made, think- including you think against the there's sitting an education opportunity minister to of do the a press country. conference today? If you are How is that even possible, Anukriti, Arnab? Anukriti, And secondly, Anukriti, may I follow up by giving a chance to the other side to respond to your rather grave charges? Arnab. Nikhil will have to respond to this. See, Nikhil, this is very, very serious. There are allegations made, but I don't see substantive proof behind it. You can respond. Munger specifically. Arnab, Munger. these kind of allegations shows that Jan Suraj has run away from the election. At least we don't have 70 vehicles Prashant Kishore breaking is the not code of campaigning conduct in a like serious Anand manner. Singh. Flying And all those candidates, even the Danapur candidate whom Anukriti is mentioning, he has failed to file nomination. And if there is a threat, why don't they go to police station? He had gone They to can the mail temple to the DGP of Bihar. Filing the nomination. They can go to court. Actually hijacked from there And these kind of allegations can't be just presented with some mere lip service. Sir, let's Just face don't facts. score point with Let's face false facts. allegations. The way things have happened, it is not You have not chosen the right Volume louder. candidate. You know the truth. You know have the truth, taken you will never 21,000 rupees, 21,000 rupees from each member if they wanted to be the candidate from any constituency. You have collected a hell lot of money Are you serious? and put a dummy Anukriti. candidate everywhere. Anukriti. In my constituency, Maner, Gopal Singh has been given ticket Nikhil and he's ji, sleeping at Nikhil his ji, I think I know if that I meet you off 70% camera, of the you're going to tell me Jan another Suraj candidates are story. sleeping at home. Let's not kid around here. You know the truth. You know what's happened 70% here. of the candidates of Jan Suraj And are dummy the candidates. thing is, the candidates have shown unethical behavior out of Jan Suraj being is not threatened, ideological movement. under threat. That's why That it has is- failed. That is the whole Before truth. They can go to election. Otherwise, why 4? Why 5? And all Some this drama 50 is can, being if done what Arnab is saying was just to correct, score a point. 50, 60 candidates Because of you Jan are Suraj would have losing run this now. election miserably. If Jan You Suraj won't was get supposed to any be just a seat. Nikhil. decoy, as their Jan Suraj won't get any single seat, and that is why, You have no real answer. आपके पास कोई and that is why these kind of allegations are coming up. 5 लोगों को धमकी देकर और पैसे देकर खरीदा गया है. होम मिनिस्टर घर I have seen the Danapur candidate of Jan Suraj, which was supposed to file candidature. He is campaigning for the BJP candidate. Why don't you call and bring him to the press conference to present the truth? Sorry? But The you truth is want what to I've been this. saying. The truth You is want what to I've create been a drama in Arnab's debate. No, the truth is what I have been saying. आप जो बोल रहे हैं वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं. आप कभी इधर बोल रहे हैं, कभी उधर बोल रहे हैं. You have no Louder, ground louder, to louder. stand on. What has happened is candidate चोरी. पहले horse trading होती थी. Just अभी don't candidate talk trading rubbish. हो रही है. And BJP has been doing You have it forever. started your politics Don't we on a not very hollow remember, ground. What has happened in Just Assam? by Don't we pumping money remember what had happened in Gujarat? and moving Don't around we remember all over the Surat? state in We Bihar, remember all of it. you want to be the leader. So Jan Suraj को कुछ भी बोलने से पहले Prashant Kishore साम दाम failed दंड भेद make a बीजेपी mark को in this जो election. इस्तेमाल करना था सब Where कर is he लिया है. campaigning? But Okay. Anukriti, In this but losing Anukriti, battle, but Prashant Anukriti, Kishore wants to one score a minute, point. just a minute. With these rotten spokespersons Anukriti, who is putting an allegation against our HR minister. Nikhil ji, Anukriti, maybe you are not aware, Yeah. but your party chief is the master of Samdam Dandabhed. He is paid money. I'm very aware of what he's capable of. He's paid money in large amounts of money to do Samdam Dandabhed in all the states. And so it is, you must not speak like an over idealist. Your My prime question minister, to you is, your favorite prime minister hired him for his entire campaign. I you believe telling me Prashant that Kishore is fair. Prashant 1 minute, Kishore are had you so much under power that he overruled are you people, are you did under Samdam the are you Dandabhed under the and illusion? money exchange on his own? No. Are you Everyone hired him are you to under come the up with are the you name under of the that illusion? particular candidate. Are you 1 minute, He has been Anukriti? kidnapped. Are you under the illusion questions. that Justin Trudeau is your prime minister?
Your Prime Minister and my Prime Minister is Narendra Modi only. What do you mean your Prime Minister? आपके Prime Minister कौन है? शहबाज शरीफ है? What is this? Your Prime Minister? What do you mean your Prime Minister? What does right your Prime Minister mean? What about your Prime Minister mean? Take that back, please. He's your Prime Minister too. He's your Prime Minister too. No, he's your Prime Minister too. Who's your favorite Prime Minister? Justin Trudeau. Your favorite. And sitting in the drawing room making a passing statement. Prashant Kishore wants to make a mark in Okay, now politics. Sanjay wants to come in on the hot debate. Sanjay, JDU. That means they were all Arnab, my submission to the entire episode of Jan Suraj is that they lost the ground when Prashant Kishore ran away from Raghopur. You know, he created that whole drama. Earlier he said that he will go to Raghopur and he will talk to people and he will see the ground and then blah, blah, blah. And then later on, once he realized that he does not have any followers, he does not have any ground in Raghopur, then he said that Arnab is calling him the master of strategy. On the other hand, you are saying that a man like Prashant Kishore will decide in half a day after going to Raghopur that he will not contest. Are you saying that? I'm sorry, then I'm very, very, very apologetic for your level of intelligence. If you think that Prashant Kishore decided in half a day that he will not contest, sorry, sir. I'm sorry. I pity your comprehension. I do pity your comprehension. He lost the ground there, and that was the countdown of his downfall. Okay, one minute. And what is your I want to talk about Lakhisarai now. I now want to spend some time on two constituencies. दो constituencies पे focus करना चाहता हूँ. पहली constituency जहाँ आज के visuals अगर निकाले जा सके, if we can take out today's visuals from Lakhisarai. Lakhisarai, do we have the visuals of Lakhisarai? You see Vijay Sinha, Anukriti for a moment please. Vijay Sinha is the Deputy Chief Minister of Bihar. He was carrying his convoy was there today in Lakhisarai and his convoy was surrounded and there was an attack on the convoy of the Deputy Chief Minister. The security personnel also, Jayan Jigyasuji, please listen. Suraksha Karmi jo the, Jayan ji, उन पर भी हमला किया गया जी ने और विजय सिन्हा ने आरजेडी समर्थकों पर आरोप लगाया. He alleged that the RJD carried out the attack and after some time Vijay Sinha reached the polling booth. Right? There he came face to face with RJD MLC Ajay Singh. There was a big verbal altercation between RJD and the sitting chief minister and Vijay Sinha said that the RJD MLC was drunk, sharab pee kar aaye the. Anyway, whatever may happen, the point is in Lakhisarai, there is an increase of 7 points in the voting today from 53.7 to 60.5. And Vijay Sinha won by 5.5% in 2020, which means ये जो इतनी increase हुई है ये उनके लिए ही होगी, उनके खिलाफ है. जो बिहार के सेमी अर्बन सीट्स है जयंत जी, वहां पे टर्नआउट ग्रोथ जो होती है उसका मतलब होता है इंटेंस ऑर्गेनाइजेशनल मोबिलाइजेशन और वो बीजेपी की एरिया है यूजुअली. डू यू फॉलो मी सर? यानी कि दिस कुड बी एनडीए स्ट्रॉन्ग होल्ड एंड द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ. अगर लखीसराय का एग्जांपल लिया जाए जयंत जी, इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ लखीसराय, does it make you feel that this voting today could have been going for NDA rather than against NDA? Vijay Sinha is a liar to the core and he is aberration in Indian politics. And if you follow his journey, you can find many examples like this. और आज ही चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि कोई पत्थरबाजी नहीं हुई है. वहां गोबर उनकी कार पर डला हुआ था और वो क्यों? वहां जिस सड़क का निर्माण उनको कराना था वो आज तक नहीं हो पाया. तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का एक स्वाभाविक आक्रोश अपने प्रतिनिधि पर जो था वो इसमें राजद का कोई लेना देना नहीं है. तो इसलिए कुछ भी हो जाए राजद को ड्रैग कर दो, ये तो इनकी एक बहुत ही चाइल्डिश टेंडेंसी है और विजय सिन्हा को नोबडी टेक्स सीरियसली. तो ये वो कुछ भी कहें लेकिन ये वो हारने जा रहे हैं चुनाव और इसीलिए वो इस तरह की बहानेबाजी कर रहे हैं. तो डेमोक्रेसी में जिनका कोई यकीन नहीं है वही इस तरह की हास्यास्पद और उपहासास्पद बात कहेंगे.
इसलिए उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन यह चुनाव जो है बदलाव के लिए है, चाहे सेमी अर्बन हो, रूरल एरियाज हो, सब जगह से लोग घरों से निकले हैं और इस विश्वास और उम्मीद के साथ निकले हैं कि 20 दिन के अंदर एक अधिनियम बनाया जाएगा कि हर घर में एक पक्की सरकारी नौकरी मिलेगी और 20 महीने के अंदर उसको डिलीवर करेंगे। 12 महीने का जोड़कर एक मुश्त 30,000 रुपये उन महिलाओं को हम देंगे जिससे वो कोई ठोस रोजगार कर सकें। 14 जनवरी को मकर संक्रांति को सरकार बनने के 2 महीने के अंदर इन वायदों पर लोग भरोसा कर रहे हैं, इसलिए लोग बीजेपी अब 2 लाख रुपए उनको मिलने जा रहा है। धान की अधिप्राप्ति पर 300 रुपये बोनस और अब तो हम उनको 2 लाख रुपए देने जा रहे हैं। 30,000 रुपए आप देंगे, इसकी गाड़ी निकल चुकी है। 10,000 रुपए हमने महिलाओं को दे दिए। वो तो आपने यही तो अब ये तो सपना देखने वाली बात है आरजेडी के लिए, आपको रोका नहीं कि अंडा खरीदेंगे, अंडा बेचेंगे, इसलिए जनता और उससे जा रही है खरीद के जो पैसे कमाएंगे, बड़े महल बनाएंगे। उससे पहले ही अंडा फूट गया। ये तो नरेंद्र मोदी का मॉडल है ना कि जुमला बता दो चुनाव के बाद। अब इस इलेक्शन में हमारे यहाँ जुमलेबाजी नहीं होती नहीं, और जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं वो तो हास्यास्पद है। विजय सिन्हा का ये तो अजय सिंह एमएलसी जो आरजेडी के हैं उनके साथ हीटेड आर्गुमेंट हुआ। नहीं, यही अगर तो, पत्थर तो, नहीं फेंका, गोबर भी फेंका उनके कॉन्वॉय पे, उनके सिक्योरिटी पर्सनल पे। I want to go back to सीरियस चार्जेस है। a lot of I people appreciate the patience of security personnel. Viewers, 1 minute. गोली चला देते तो 1 minute. One more point I want to raise today. I want to talk about one very controversial and important constituency, please. And that is मोकामा। ललन सिंह के बयान को भी आप मैं मोकामा ललन सिंह के बारे में ही बोल रहा हूँ। अनंत बाबू की तरह लड़ना पड़ेगा। अरे भाई, आपने संविधान की शपथ ली है और ये कि नहीं वो जेल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उस पर नोटिस तो लिया ना। प्रत्यारोपी को इतना महिमा मंडित करेंगे, आपकी जो सबसे वॉल्यूम बढ़ाए, दोनों की वॉल्यूम बढ़ाए। नरेंद्र मोदी के मंत्रियों का यही चरित्र है। नरेंद्र मोदी के मंत्रियों और कारकुनों का यही चरित्र है। फंक्शनिंग बट देयर कोई गवर्नमेंट है कहां? न बिहार में है, न भारत में है। Which is applied, and election commission of India is functioning on that. They have taken note. नहीं क्या ललन सिंह ने जो कहा, election commission has taken note of ललन सिंह ने जिस निर्लज्जता के साथ कहा है कि हम सबको अनंत सिंह बनके लड़ना पड़ेगा, मतलब हम सबको हत्यारोपी की तरह लड़ना पड़ेगा। आप लोग भी हत्या कीजिए, उकसा रहे हैं लोगों को। बार-बार एक बात रिपीट करके आपको और कोई बात नजर नहीं आता है। होते हैं ललन सिंह कौन है? आरजेडी बहदवास से चुनाव हार गई है। पहले चरण में आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया है। नहीं, वो तो आपको पता चल जाएगा 14 नवंबर को चचा नेहरू की जयंती पर आपको हॉन्ट करेंगे नेहरू। जयंत जी, अरे चाचा हम सरकार बनाने जा रहे हैं। एक मिनट ज्यादा नेहरू मत करिए। जयंत आजकल ये ज्यादा नेहरू मत करिए। वैसे भी जोराब ममदानी क्यों न्यूयॉर्क में नेहरू की चलती है, भारत में नहीं। न्यूयॉर्क में नेहरू की चलती है, भारत में नहीं। डायरेक्ट बात करने वाला आदमी हूँ। गया नेहरू का जमाना, ये नया भारत है। अरे भाई, ये नया भारत है सदियों तक। ये जोराब ममदानी वाली भारत नहीं है, न्यूयॉर्क नहीं है, ये मैनहट्टन नहीं है, भारत है भैया, भारत है। इधर न्यूयॉर्क की नहीं, मोकामा की बात करनी पड़ेगी। मोकामा में दोस्तों, मनोज जी, the turnout in Mokama is a very interesting story. इन आतताइयों ने one minute. Just calm down, everyone. Calm down. अर्जित लोकतंत्र को यूं ध्वस्त नहीं होने देंगे। जैन जी, सबको साइज में लाना पड़ेगा इस डेमोक्रेसी में, क्योंकि जनता मैंडेट देती है। आपके कहने से नहीं होगा कि घर से नहीं निकलने देंगे। जो ऐसा बोलते हैं उनको घर। देखिए, आप जैसे बोल रहे हैं ना, मुझे आपके और कन्हैया कुमार में बहुत सिमिलरिटी लग रही है। कहीं उनके जैसे राजनीतिक हार भी आपके सामने ना हो। आप जो है अर्नब गोस्वामी जी, आपको अपने बारे में ज्यादा पता होगा। नेहरू का डंका ऑक्सफोर्ड से लेकर, कैम्ब्रिज से लेकर, हार्वर्ड से लेकर, कोलंबिया, दुनिया के हर कोने में। पता नहीं भैया, मैं एक बात बताऊं, एक मिनट आपके बारे में नहीं पता। जैन जी, आपकी बात सुन ली, मेरी बात सुनिए।
देखिए मेरी बात सुनिए सबको रखिए स्क्रीन पर। अरे बात सुनिए ना, इधर बैठ के आप बोल रहे हैं भगवान की कृपा से जयंत जी शांत हो जाए, कुछ कह रहा हूं आपको मैं। भगवान की कृपा से एक मिनट, भगवान की कृपा से हमें एक मिनट भगवान की कृपा से हमें मौका मिला है, स्कॉलरशिप पर हम ऑक्सफोर्ड पे भी गए और फेलोशिप में हम कैम्ब्रिज में भी पढ़े। हमको तो नेहरू जी दिखे नहीं कहीं वहां पे, हमको तो दिखे नहीं कहीं वहां ऑक्सफोर्ड की गलियों में। काहे कि आपको देख रहे हैं नेहरू जी, ये डंका बजा रहे, हम पढ़े हुए दोनों जगह में, हमें तो नेहरू जी नहीं दिखे भैया, वहां से मणिशंकर जैसे घूमते हैं। अच्छा अभी अब बात है मनोज जी से। मनोज जी ऑन अ सीरियस नोट, मुझे और मनोज जी को रखिए। मनोज जी, द टर्नआउट इन मोकामा हैज जंप्ड ड्रामेटिकली फ्रॉम 53.9% in 2020 to 62.16% नाउ, व्हिच मींस एक्स्ट्राऑर्डिनरी जंप हुई है 8 परसेंटेज पॉइंट्स की। मोकामा में अनंत सिंह वर्सेस अनंत सिंह, नाउ अंडर अरेस्ट, रत्नाकर जी, versus Veena Devi, wife of another mafia don Surajban Singh. In the middle, Prashant Kishore's mafia don Dularchand got killed. तो 3 माफिया डॉन थे, एक प्रशांत किशोर के माफिया डॉन, एक आरजेडी के माफिया डॉन। प्रशांत किशोर का माफिया डॉन ना बोले अर्नब, वो किसी के समर्थक थे। वी आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर एनीवन हु कम्स। ये किसी के क्या, कुछ नहीं, किसके समर्थक? नेशन वांट्स टू नो, पूछता है भारत, किसके समर्थक थे माफिया डॉन दुलारचंद? घोड़ी के पीछे नाचते हुए किसके समर्थक थे माफिया डॉन दुलारचंद? Whose supporter was Mafia Don Dularchand? KBC style. Option 1 RJD. Option 2 Congress. Option 3 Prashant Kishore. If somebody Option 4 phone a friend. Option 4 phone a friend. तो बोलो प्रियदर्शी is the candidate. प्रियदर्शी को दुलारचंद, प्रियदर्शी के प्रिय क्यों हो गए, पूछता है भारत। आप बिल्कुल पूछिए भारत संजय। That doesn't make you. Don't distance yourself from a man who died fighting for you. You know, right or wrong? You're not calling the real Don. Don't. That is why everyone is running away from Jan Suraj, because they are not acknowledging. They are not. Okay, last point. Manoj ji, what does the Mokama trend show, Manoj ji? देखिए, चुनाव का जो प्रक्रिया आगे बढ़ता गया, जिस तरीके से वहां पे गैंगवार कहिए या आपस में टकराव करिए, उसके बाद में क्या हुआ कि बिहार के फॉरवर्ड क्लास में कुछ एरिया में देखेंगे कि राजपूत और भुनियार एक साथ पोल नहीं करते हैं, और कुछ एरिया में देखिएगा कि राजपूत और ब्राह्मण एक साथ पोल नहीं करते। स्थितियां वहां पे अनंत कुमार को जेल में जाने के बाद स्थितियां ऐसी बनी है कि ये जो शाहबाद का जो एरिया था और मगर अंगिका का भी जो एरिया कहिए, यहाँ पे जो राजपूत और भुनियार अलग वोटी पोल कर रहे थे, लेकिन इस बार दिख रहा है कि दोनों एक साथ वो आए हैं पोल करने के लिए, और इसके बढ़ने के कारण। दूसरी बात है कि लोगों को एक चीज लगा कि इस गैंगवार में कहीं न कहीं, चूंकि वो क्षेत्र बहुत काफी कट्टर है, आनंद जी के बहुत सपोर्टर भी हैं, तो उनको लगा कि इस बार हमको पोल आके बढ़कर करना चाहिए और अपने लीडर को काफी बढ़ा के निकाला। दूसरी बात है कि मैंने जन स्वराज पार्टी के बारे में एक बात कहूंगा कि जितने लोग ये 3 साल के अंदर जो कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी ने कि मैंने वहां हड्डी गलाया है, तो क्या ये 3 साल के परिश्रम में इसी तरह का उम्मीदवार खोज पाए थे जो पहले किसी और पार्टी में? मनोज सिंह जी will be back on the polls day as I take a break tonight. Who's trying to make the Bihar election at this very moment Hindu versus Muslim? When I'm back. Time for a quick breather. आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला।